darlings. Oh, hi, Janice. Hi, I never realized that a good cut can add so much confidence to one's life. I must admit that I always had the perfect cuts and curves. But Janice, it's not these cuts I'm talking about. It's the cut my hairstylist gave me. Sweetie Beanish Parvez. और नतीजा आपके सामने ही. In politics, in hair, and also in blouses. No wonder every time we have a head of state visiting, he depends on Asim ya Tivana to present our culture in the form of a fashion show, with Resham wearing the shortest blouse possible, cut to sea level. Bhai, हमारा culture है ना? Poor, fractured culture. Identity crisis का शिकार. I think the closest we ever get to culture is when we send our stools to the lab. खैर, बात हो रही थी कट्स की. हमारे यहाँ कट्स का बड़ा कल्चर है, ख़ास तौर से हुकूमती इदारों के अंदर. मैंने सुना है कि बहुत सी बेगमात के ज़ेवरात का इन्हिसार इन्हीं कट्स पर है. It's these cuts, Janice, that has cut down the pace of development in Pakistan. वैसे कराची में बड़ी तरक्की हुई है. हाय, देखिए ना, we have an underpass that can be used as a swimming pool also. वो काम जो इजराइल के बम्स लेबनान में ना कर सके, वो काम बारिश ने कराची में कर दिखाया. Bringing life to a standstill. हाय, कभी ना सोचा था कि बाराने रहमत इतनी जहमत भी बन सकती है. But trust our city government. वो किसी का कुछ भी बना सकते हैं. Guys, I think our city government deserves a bang. Oh, Janice, a big bang. That's why I love you so much. कितनी जल्दी मेरा कहा मान लेते हो तुम लोग. बड़ी तरक्की हुई है. अब देखिए ना, सिर्फ 30-30 घंटे के पावर ब्रेकडाउन्स, फ्लडेड रोड्स और नॉन ऑपरेशनल सिविक एजेंसीज पर क्या रोना. तरक्की हुई है जानिस, तरक्की हुई है. आप खुद ही देखिए, वो जो कभी COAS थे अब प्रेसिडेंट हैं. वो जो कभी जद्दा में थे अब लंदन में हैं. वो जो लंदन में था अब हुकूमत में है. और वो बेचारा जो कभी जेल में था अब अमेरिका में है. कौन कहता है कि तरक्की नहीं हुई? I guess मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. Otherwise they're going to try and cut my power supply also. लेकिन सच पूछिए जानिस, तो you know what makes me so fearless? Is the fact that my power comes through you and your love. और ये वो power source है जिसे कोई नहीं काट सकता. Not even WAPTA. Water and Power Disappearing Authority. ये क्या हो गया? I think I should call the WAPTA chairman. हेलो, चेयरमैन साहब, बेगम नवाजिश अली बोल रही हूँ. हाय, मेरे घर की बिजली फिर चली गई है. क्या कहा? हाय जानी, एक तो तुम और तुम्हारा मजाक. कहता है कि मेरे होते बिजली की क्या जरूरत है. मेरी जान, मुझे बिजली की बहुत जरूरत है. तुम में है बिजली तो भर दो ना थोड़ी सी मुझ में. मेरा मतलब मेरे घर में. हाँ, ओके ग्रेट, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू देन. हाँ जानीस, कॉन्टैक्ट्स फिर काम आ गए. जबकि चेयरमैन वापदा साहब के साथ मेरा असल कांटेक्ट काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है फ़ोन पे उन्होंने मेरे भरम की इतनी लाज रख ली कि बिजली वापस भेज दी. But I tell you, this WAPTA and KESC puts Mullah Umar and Osama to shame. I tell you, terrorizing so many people. Well, talking of terrorists, I have a guest tonight, जिसको पाकिस्तान की बहुत सारी औरतें किसी terrorist से कम नहीं समझती. They feel constantly threatened by her because of her stunningly beautiful looks. They say that she goes around terrorizing them, by how beautiful she looks.
But I know her. She's no terrorist. She's a lovely, lovely person with a lovely, lovely heart. A very dear friend. आप सबको शायद वो सिर्फ खूबसूरत लगती होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसकी मुस्तकिल मिजाजी, उसकी डेडिकेशन और उसके हार्ड वर्क में है. I'm not going to make her wait for too long. She's a dear friend, and I'm very excited to have her over. So step right in. Atiqa Odho. Atiqa, my jaan. Kaisi you look gorgeous, darling. Wow. Hi, for me. Atiqa. Hi, for me. ये मेरे लिए लेकर आई हो. How lovely, darling. You know I love receiving gifts. लेकिन यहाँ पर किसी को तमीज़ नहीं तोहफे लाने की, तोहफे देने की. But I guess it's all about good upbringing, really, darling. Thank you so much. You're very, very thoughtful. So much makeup, darling. So much makeup. I don't think I'll have to go to Tariq Road for the next 1 year now. No, and I don't think you This really is need wonderful. it. But I just wanted to bring something for you. Hi, these are wonderful, darling. These are wonderful, really. Thank you so okay, you much. can see them I have to later. show my viewers बाद also. में. हाँ, चलो. क्या हाल चाल है तुम्हारे? I'm fine. तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें टेररिस्ट पुकारा? Absolutely not. वही मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे कहते हैं आप हमें टेरराइज करती हैं. अच्छा. So it's a different version of it completely. I know, darling. क्या हो रहा है आजकल? Calm. क्या काम? Basically busy with the brand, makeup, and माशाल्लाह से ये मेरा तीसरा साल है in retail, and here I'd like to tell you and the audience watching कि I'm still the only woman in retail today in Pakistan, which amazes me because मैं समझती हूँ कि women have to basically come into big business. हम जो ख़वातीन को कैप कर देते हैं boutique mentality में, I think it's unfortunate because women do have great management skills and they should really look at big business as opportunities. And उसके अलावा then of course television production because I'm producing a lot of software for the channels, telefilms, lifestyle makeover shows. यहाँ पे ख़वातीन को दिखाना या समझाना कि वो अपने साथ क्या कर सकती हैं, कि रहने के तरीके, तैयार होने के तरीके, उसमें बहुत मज़ा आता है because it's extremely gratifying when you feel that you can help somebody. I know, जान. मुझे ये बताओ कि तुम इतने सारे काम कैसे लेती होती का? मैं सोचती रहती हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, बट somehow the other कुछ नहीं कर पाती. दो वजह आई थिंक जो है, एक तो वजह ये है कि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो अब एक वो वक्त आ गया कि अगर मैं काम ना करूँ तो आई गेट डिप्रेस्ड बिकॉज आई एम अ वर्कaholic. दूसरी वजह ये कि मैंने अपने बच्चों को भी साथ साथ काम में पाला और माई फैमिली इज़ गॉटन यूज टू इट. माई हस्बैंड वेरी सपोर्टिव. जावेद, मेरे बच्चे सारे बहुत, इनफैक्ट ज़्यादातर सब काम में इन्वॉल्व हैं. जावेद माई हस्बैंड इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रांड विद मी. वो सारे मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल साइड हैंडल करते हैं. आई डू द क्रिएटिव साइड. मेरी जो बड़ी बेटी है उमनिया इज़ इन टेलीविजन विद मी. शी प्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर इन माई कंपनी. इनफैक्ट इट्स हर कंपनी. मैं कहती हूँ तुम्हें मैं तैयार कर रही हूँ ताकि इवेंचुअली इट्स योर्स. बच्चों के लिए आप काम करते हैं ना, और क्या करते हैं आप. एंड सो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है एंड फोकस बहुत अच्छा रहा है. I realized fortunately very early in life that if I wanted to make anything of my life I have to be committed to whatever I take on as a challenge. अच्छा अतीका, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक ख़ास तबका है लोगों का जो समझता है कि औरत का तैयार होना या यूजिंग टू मच मेकअप या उसका बनना संवरना, ये शायद औरत के साथ ज़्यादती है, क्योंकि औरत को एक शो पीस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है और औरत को उसके हुस्न के बजाय उसके सब्सटेंस पर गेज करना चाहिए. मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ कि for me getting dressed up and getting made up and looking pretty is about celebrating my womanhood, really. Absolutely. What are your comments on that? देखिए, अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको, जैसे if you're using a woman and exploiting her a certain way, that's wrong. लेकिन if as a woman I enjoy dressing up, मुझे मज़ा आता है कि जी मुझे शौक़ बहुत है and मैं समझती हूँ कि I'm very proud to be a woman. मुझे शर्म नहीं है. We live in a country where unfortunately औरत पे बहुत दबाव होता है. there's a lot of pressure on women that कि जी आप ज़रा पर्दे में, not पर्दा but just हद में एक रहे and all, and I think it's unfortunate because वो she is a particular person and if she has a personal desire to live her life a certain way, she has a right to do so, as long as you're not hurting somebody. आप अगर किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे और आप अपनी औकात या अपनी हद से आगे नहीं बढ़ रहे, तो I don't think anybody has a right to tell you how to live your life.
That's absolutely true, and that's why I'm so fond of you, darling. Because I know you will never let anybody dictate to you their Absolutely terms, not. really, and you live your life on your own terms. Absolutely. You know. But I hurt nobody. How was show business, or how is show business for you? Do you think it's an exploitative industry, Atiqa? मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पाकिस्तान में काम करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लॉइट कोई कर नहीं सकता. इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. और मैं उस वक्त आई थी इस मीडिया में जब अब देयर इज़ अ बिट ऑफ यू नो इफीनेस इन द बिजनेस बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच कंपटीशन एंड इट्स टफर फॉर द यंग गर्ल्स टू ब्रेक थ्रू. बट आई केम इन एट अ टाइम व्हेन आई रियली हैड I was there at the right time and the right place and the opportunity was right. So for me it wasn't such a struggle. Also मेरी एक conflict एक और level पे थी कि because मेरे ख़ानदान में nobody's ever been in media. I'm the first person who's gone into this field and everybody thought I was absolutely mad. They said, are you mad? I mean, you know, why do you want to date? As I said, my mother doesn't understand why. I work, you know, when I have the, you know, the option of sitting at home and letting the husband do it. तो लेकिन having said that, I'm very fortunate कि मैं इस field में आई. And अगर आप में commitment है और आप ईमानदारी से इस काम में आ सकते हैं and you come for the right reasons. I love what I do. I love acting. I love producing plays. I like interacting with creative and intelligent people. इस काम में ज़हीन लोग बहुत हैं, misunderstood but extremely intellectual people. और मैं समझती हूँ वैसे लोग आपको किसी और फील्ड में मिलते नहीं हैं. तो I'm very fortunate that I ended up in this field because my life has been so rich. You started with Anwar Maqsood. जितने लोगों के साथ आज तक काम किया, who were the closest people to you in television? You know, it's really funny because मैंने जिन लोगों के साथ काम शुरू किया, आज दिन तक वही मेरे सबसे करीब हैं. जैसे जिन लोगों के साथ मैंने सितारा मेहरुनिसा किया था ड्रामा, दश्त. I mean, I know everybody in the industry. मेरे ताल्लुकात बहुत हैं. माशाल्लाह से एक you know लेन देन चलते हैं, काम में चलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है. पीपल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट देम, यू नो. अगर आप इज़्ज़त चाह रहे हैं तो इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी होता है, यू नो. एंड यू मस्ट हैव लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट टू कैरी योर सेल्फ थ्रू दिस इंडस्ट्री एज वेल. लेकिन यह है कि मेरे जो शुरू के जितने भी colleagues थे, some of my nearest and dearest friends today and our children are growing up together today. So again, that's a very fortunate side to how I ended up because I think I found wonderful friends. You know, I've just been for the last almost more than a week now. I've been so upset. I've been so depressed. I've actually been, तो मुझे लग रहा होगा आज मेरी शक्ल देखकर भी मैं अंदर से मेरा दिल बहुत शक्ल हसीन बहुत लग रही है. Thank you so much, darling. And I love the necklace. वो हुस्न तुम्हारी आँखों में है. Hi, thank you so much. Thank you so much, really. And I love the way you match your jewelry. Really? Yeah. Thank you so much. You have really, good coming taste. from you, it's a real compliment. You have good taste. Thank you so much. मैंने gossip सुनी. हाँ. You know how people love to talk all this बकवास. I like gossip. हाँ? I like gossip. हाँ. मैंने सुना हाँ. कि Atiqa Odho is well. I don't know how to say this, darling, and I don't want to upset you. But you know how people like to talk. मैंने लोगों से सुना कि Atiqa Odho is soon to become the first lady of Pakistan. Have you heard this one, darling? Are you joking? I'm serious. No, actually, I shouldn't be surprised because somebody actually asked me this question and I thought it was quite sweet. अच्छा. And how does one answer that? This is it. I mean, the thing is that you hear so many things. जब आप public figure होते हैं, तो people assume they think that you will be a particular way. In fact, मुझे याद है कि जब मैंने एक ड्रामा शुरू किया था मेरीन जबार के साथ, हम कर रहे थे, we started shooting a play called हरजाई. तो for 2 months we spent a lot of time together. तो सुबह आती थी to pick me up, shooting पे जा रहे हैं, तो उसी के सुबह I have a छोटी बेटी ना, तो उसका स्कूल होता है ना, तो 7 बजे उठ के फिर तैयार हुए, फिर you know बुरी हालत में, people don't see that ना, you're going to school and stuff with your kids. So Marine said to me, she said, please, for God's sake, don't ever let anyone see this side to you, because out there, there's just this amazing fantasy about the kind of life you live. And it's all part of that package, you know. And I kind of understood it. So I don't know, the gossip doesn't bother me anymore. I just think it's the way maybe they would like to see me, or what they're sort of
wanting to believe, and it's part of that fantasy package. So you just take it with a pinch of salt. But you know, Jani, if I had it my way, I would make you the president. You would? Yes, Why? darling. Come on. Of course you're so beautiful, really. I mean, you project the nicest face of Pakistan in the world, you know. Sweet. I'm not competent enough, unfortunately. परवेज़ भाई से मुलाकात तो हुई होगी. हाँ जी, हुई है. And how do you find him as a person? He's a wonderful person. He's a wonderful person. His wife is a wonderful person. They have been very sweet to me. I've been invited to several events. I've actually hosted several events for them at the presidency. So you know, I think उनका जो एक काम है बहुत मुश्किल है. And हम जो हमारा जो एक यहाँ पे attitude है कि नहीं जी सब कुछ उसने करना है, इस आदमी ने करना है, is wrong because we need to also do work for this country. You know, हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? छोटे-छोटे contribution से आप फर्क बने. You know, everybody needs to figure out their role in this big job that we need to do for Pakistan. And I'd hate to be in his situation. Really, I think it's the most thankless job he's got right now. People will never be happy, no matter what you do. And you've known Shaukat for a long time also. Well, I know I've known the Prime Minister and you know, Mrs. Aziz since we've met in New York because they were there at the time, and I lived there with my husband and my children, and हमारी वहाँ पे मुलाकात होती थी in community gatherings and stuff, you know, where the Pakistani community used to meet. And again, they are an extremely wonderful couple. Both the Prime Minister and his wife are lovely people, and he has a very tough job. And I wish more people could see them on a personal end and see what sort of down to earth and professional people, you know, especially him. He's a professional man, and they need to understand कि I think it's tough for him because कहाँ से वो आए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं और किन लोगों के बीच काम कर रहे हैं, you know. So I think we're in good hands, really. But मुझे तुमसे एक शिकायत है तीका. Okay. उस वक्त से तुम कह रही हो परवेज़ भाई has got a tough job, Shaukat has got a tough job. What no, about you have me, a tough, darling? you have a very मेरा tough मुझे job. भी acknowledge You are करो. a very I brave also need person. some acknowledgement also. Listen, I'll go on record. You're a brave person, and frankly, we are very proud of you because, hey, I mean, you know, who says Pakistan is not progressive? Look at the ladies it's got sitting on its channels and you know, opening up to the world. Hi darling, thank you so much, and I feel great having you over. Really, मेरा थोड़ा mood better होना शुरू हो गया. जावेद कहाँ है? Mood अगर आपको और gossip करना है आप कर सकते हैं. हाँ, वो करते हैं. अभी तो बहुत gossip करते हैं. I can be very naughty also. Of course, darling, and I want you to be naughty yourself. अच्छा मुझे बताओ कि जावेद कहाँ है आजकल? जावेद कराची में. कराची में ही है. अच्छा, he's here. Yes, absolutely. How wonderful. We work together. हर रोज लड़ाई होती है. अच्छा, but you guys were away for some time. No, we went to Lebanon, we went to Beirut. Well, we lived in the States. We were in New York for about 8-9 years. अच्छा. And 3 साल हो गए हम वापस आए हैं. And फिर Beirut के अब we have, but we've been here for 3 years and working together. And हर रोज we fight over some issue there because I handle marketing and product development and he handles finance. तो marketing और finance में तो कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती ना. तो हमने एक sort of we decided one day कि we are not going to bring work home because कभी we never got time off, you know. So we just don't talk about work at home anymore. But good, you can take pleasure home, right? हाँ, but that means I can come home with Javed when you're not around. And you won't mind that, really? Well, no, not for you. I wouldn't mind it at all. Absolutely. Is Javed better at finance than Shaukat? Because you know I'm very bad with finances. I just don't know any financial management. You know, तो पहले तो मैं Shaukat को कहती थी कि Shaukat तुम मेरे finances manage कर लो. But you know, ever since he became the Prime Minister, you know, he has had no time to do it. You know, and I don't blame him, as you said. Fortunately, Javed has the time to do it because he's not Prime Minister, so he handles my finances. Yes, and he's very competent. You said he is a competent man. Then he can manage my finances also. Absolutely. है ना? I think you need to come to me and I need to manage your life. Hi, seriously. I mean, we can get to Javed later. Seriously, Atiqa. You know, the two of us together, Absolutely. we could form a lethal combination. Absolutely. Really. है ना? Absolutely. And I think it's time now. Absolutely. You're very popular. You need to get out of your drawing room.
I do, and I think this channel has been taking me too much for granted, really. कैसे मेरे ड्राइंग रूम में कैमरास लेके घुस आए? हाँ बिल्कुल. हाँ, और मेरा क्या नहीं, फायदा? but आप you see keep a positive attitude on it. They have actually helped you or helped you acquire a certain standing in society, and you all collectively need to take. Now you sound like the channel, sweetie. No, but what That's you need what they tell me. No, but you see, you can either fight them or you can have them sort of help you go even further. So again, you need to be intelligent about this. हाँ, but by the way, guess what? I have somebody else here Ooh, tonight, yes. जिसके साथ मैं खुल के बहुत सारे मशवरे लूँगी, Okay. क्योंकि आज मैंने सोचा था कि चूँकि मैं तो उस मीडिया के बिजनेस को समझती नहीं हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं एक बेवा बेचारी ये एक शोगल शुरू किया था कि अच्छे लोगों से मिलूँगी, you know, share my friends with my viewers really, but you know, I have to understand now. I feel कि अब मुझे I need to get a hold of जो tricks होते हैं क्या of the trade business होते हैं, side of things, absolutely. of things. And he's a very very talented person who's here, you know, and I know well, most of his talents, but Oh you dear. wouldn't know that. But I don't think he wouldn't like to wait for too long, and I'm sure बहुत सख्त बेकरार हो रहे होंगे, you know. I mean, he's always wanting to come really. Step right naughty in, girl. Sajid Hasan. Sajid, so wonderful to see you, really. और मुझे उम्मीद है अतीका मैंने कोई गलती तो नहीं करती साजिद को बुलाकर? नहीं मैं आजकल कोई लड़ाई तो नहीं है तुम दोनों की चल रही ना? नहीं. एक तो हाफ द टाइम आई फाइंड आउट कि तुम लोगों की आपस में लड़ाई चल रही होती है. मैं भी साजिद, so wonderful to see you. That's so wonderful to see you. So now at least I know that both of you are comfortable with each other. Oh We sure, always but were, man. this is one of the person that I was sort of referring to, कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसा एक दोस्त मिला और इस काम की वजह से मिला, और हमारे बच्चे साथ साथ पल रहे हैं. साहिर and Zarmeen are best friends. अच्छा, They're okay. inseparable. तो They are. How lovely, really. और शकीला के क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. I hope she didn't feel sort of insecure. She always feels threatened. Threatened. with हाँ, you कि तुम around, मुझसे you know. अकेले मिलने आ रहे हो? क्या करें, मैंने बहुत कहा उनको कि आए मेरे साथ, but she didn't want to, so कोई बात नहीं. हाँ, देखो बेचारी शकीला ने जब से मुझे देखा, you know, I've known them for a long सिर्फ time. शकीला ने क्या, पूरी कौम की खबर थी. कौम भी अच्छी है, ख़वातीन भी अच्छी है, but I'm talking about शकीला. जब से शकीला ने मुझे देखा, उसने पता है, उसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया. अरे उसने कहा कि मैं तो, you know, she decided that day कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती. No, I think that on the contrary, अभी जिम Can I छोड़ के defend आए. my friend? Yes, please go Yes, ahead. Shakila is a very dear friend of mine. अच्छा. And I think she is one of the sweetest and most giving and most secure women I have met in my life. And you know, you're lucky. Thank you, I am. He's lucky to have her, you know. No, he is, no Yeah. doubt. But you know, I tried to get friendly with her myself, but Achha. I don't know somehow. Oh, she's a wonderful person. I know there are a lot of people tell me that. And but she's with wonderful me, she because has she's some put up with problem with him. me. I don't know I whether mean, it's she's my put up with Sajid. charms or whether it's You know, my looks or I don't I've know what also it is. put up with you, Sajid. Yes, Even you I've all put have, up I'm with you. sure. Yeah. I swear, Shakila and I'm a I really brat. put up with you all these years, huh? Well, she has. Yeah. क्या हो रहा है साजिद आजकल? बहुत कुछ काम और सिर्फ काम. हाय मेरी जान, मैंने सुना तुम्हारा दिल कमजोर पड़ गया. हाँ, काफी. है ना? इसमें मेरा कसूर है. मैं बहुत सारे महीनों से नहीं मिली. हाँ, बेचारा मुझे बिल्कुल, फोन आपकी करता गलती रहा कि नाजी कहाँ गायब हो, नाजी कहाँ गायब हो. नाजी मुस्तकिल गायब है. नाजी मुस्तकिल नाजी के गायब पास टाइम ही नहीं मिलता. फिर एक दिन ये जब तक शो शुरू नहीं हुआ था बहुत टाइम हुआ करता था इनके हाँ, पास. तब तो बहुत टाइम था अब साजिद. तो You remember बिल्कुल the टाइम lovely नहीं. times we spent अब together. तो शेखों के फोन आते रहते हैं. हाँ? कहाँ अभी खुद ही कह रही थी. हाँ, मुझे बिल्कुल बता रही. बिल्कुल, नहीं absolutely. चले ठीक. Are you talking about Sheikh Rashid, by the way? हाँ, No, मैंने शेख सुना साहब के शेख बारे. साहब तो बड़ा ख्याल रखते हैं ख़वातीन का. मेरे से पता नहीं क्यों यहाँ उठ के चले गए, नाराज हो गए थे. क्या उठ के हो चले गए क्यों? हाँ, you know, I was so shocked and I wore my best sari that night. I wore my Oh my best sari, God. जान. You know, and he just walked out. नहीं, I'm sure कि उनको कोई मसला कुछ ज़्यादा ही कह दिया हाँ, मेरे होगा. ख्याल में कुछ मसला हो गया था शायद. Wow. Poor man didn't know how to deal with it. हाँ? No, he couldn't deal with you. He couldn't deal with you. आपके हुस्न के साथ उनको intimidate हो गए ना. That's why. So obviously then he had to leave. अच्छा, दिल की सुनाओ. अब दिल कैसा है? दिल बहुत बेहतर है पहले से, मगर जाहिर है बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी. You know, that's my problem with Shakila. नहीं ख्याल रखती मेरे साजिद का. कभी मेरे साथ रहती तो कभी दिल को कमजोर ना पड़ने देती I साजिद. wish he was here to defend us. नहीं. I will defend you, Shakila. नहीं, मैं बहुत Okay. हसास तबीयत का हूँ, इस वजह से शायद दिल वाला हूँ.
इसलिए शायद नहीं, साजिद बहुत जज्बाती आदमी है। जज्बाती और मुंह फट। ठीक And that's है। one thing I like about ठीक है। Sajid, that he is terribly honest. And we've had tremendous fights, by the way. Sajid and I have had fights where we haven't spoken to I each other for apologize years. if I apologize. Always if his mistake, no? It always is. Ask him. Sajid, your हमेशा। mistake most of the times? Most of the time, all the time. in All fact. the time, Yeah. darling. He's a But nice देखो man. मेरी आज तक कभी से लड़ाई नहीं हुई। हो भी नहीं सकती, हो भी क्यों? नहीं सकती। बस नहीं हो सकती ना। लेकिन मुझ जैसी मोहब्बत नहीं है आपके साथ। That's true, but बड़ी तारीफें करी आज साजिद ने बैठ के मेरे ड्राइंग रूम में तुम्हारी हाँ, अतीका। आप और आपको बुरा लगा। और मुझे अच्छा लगा, अच्छा, खुश लेकिन होने और चाहिए। अच्छा लगता कि थोड़ी तारीफें मेरी भी हो जाती नहीं, साजिद। आपकी तो बहुत तारीफें दुनिया से हो रही है और भाई। इसको डिस्कवर कर लिया तुमने जान। You know, I also want to rediscover my life. Sajid, can you help me discover साजिद, something? I'll leave early. हाँ, My- immediately my life after the मैं चली show, जाऊँ? immediately after मैं the show, चल- दुनिया मैं के जाऊँ? सामने तो नहीं ये नहीं हो जान, पाएगा। हाँ, तो I mean Stay आप here. लोग you can continue. I mean, you know, if Shakila trusts you, I trust you too. I have no issues, darling. तो अच्छा, coming to films now. टीवी का रिश्ता तो तुम लोगों का रहा माशाल्लाह। इसके अलावा ये कि both of you have had a fling with cinema. Sure. Sajid has done quite a few films. How many have you done now? Two. You've done two अच्छा। films only. I've done 3, so I beat you by 1. हाँ. Yes. Who discovered Sajid Hasan? Who discovered Rahat Kazmi? Really? राहत काज़मी, काज़मी साहब हैं जिनको आप बुलाना चाह रही हैं। काज़मी साहब discovered me. I was working as a journalist. TV Times एक मैगजीन हुआ करता था, मंसूरी साहब उनके उसके मालिक थे, हैं बल्कि उनके यहाँ मैं काम किया करता था। फिर वहाँ से उन्होंने एक थिएटर कंपनी शुरू की। उनमें उनको रोल नहीं, कोई छोटा, बहुत ही छोटा सा एक रोल था जो किसी को मिल नहीं रहा था, जो कोई करने को तैयार नहीं था। वो उन्होंने मुझे करने को दिया, वो उनको पसंद आया। The next role was one of the biggest roles, you know. Wow, I love big roles, darling. बिग रोल से बुरा थी कि उसमें बहुत मार्जिन था, 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे एक ही एक्टर ने, तो वो मैंने किया। कुछ 1.5 साल तक थिएटर करता रहा। फिर सायरा took me on from there, you know, she saw what I was doing in theatre. And then सायरा, अगर टेलीविजन की आप बात कर रही हैं तो फिर टेलीविजन में सायरा लेके आ गई। और फिर मैंने कम से कम पहले 2 प्रोजेक्ट्स उनके साथ ही किए थे, खलीज और फिर धूप किनारे। धूप किनारे was a phenomenal hit. I remember. What a lovely play, really it was. It was, you know, हसीना ने कमाल लिखा, वो आज तक आज भी it's an evergreen play. You can मुझे watch ऐसा it. लगता है जैसे मैंने और कोई काम ही नहीं किया कई दफा, क्योंकि कहीं भी चला जाओ धूप किनारे कई लोग तो मुझे डॉक्टर इरफान अभी तक समझते हैं। बुढ़े हो गए आप, खत्म हो गए, लेकिन डॉक्टर इरफान आपके साथ लगा रहता है। तो यू नो इट वाज वन ऑफ दोस, यू नो, मगर ये कि डिफाइनिंग मोमेंट ज़रूर था मेरी ज़िंदगी में धूप किनारे। सो सायरा और राहत काज़मी दोनों मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रोमिनेंट फिगर करते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे बेटे का नाम साहिर जो है, मैं उनकी गॉड मदर सायरा की वजह से मैंने रखा। अच्छा, अभी रोल्स की बात हो रही थी, मुझे स्विस रोल्स याद आ गए। I love Swiss rolls too. You know, that's one interest that Pinky and I have in common. You know, we connect very well. You know, with the Swiss rolls and the Swiss bank accounts and all of that. मुझे बताओ। I wouldn't know about them. Sajid, Why what's do you your- need to work or What- acquire business sort of skills if you have Swiss bank accounts? हाँ, Well, my husband left, but you know, एक होता है ना हर इंसान को अच्छा। कि आपको एक Self worth. एक सेल्फ वर्थ का एहसास बिल्कुल। ज़रूरी होता है, you know, and then if I'm giving so much of me, darling, I think I deserve something in return, हाँ. don't I? oh absolutely, you deserve everything. What's your That's favorite coming to dessert, you. darling? What's your favorite dessert? My favorite dessert. I'm not I'm not a dessert person that way. कोई भी fruit छोटा मोटा गरीब आदमी जो खा सकता है। कोई Try ज़्यादा- me someday, sweetie. Try me. And keep coming back, asking for मैं more. अभी Yeah, शकीला I से have इजाज़त to ले leave लेता now हूँ। because this is getting too hot and heavy, and you know, I just don't know how to deal with this at this stage. Come on, Jan, it's going to get hot. We've now. gone all it the way is. from like Musharraf to like hot and heavy. It's just too much for me in 1 hour. But you know, mashallah, another thing that I have to say about both of you really is that from Sitara or Mehrunisa, Atiqa Odho, और आज Atiqa Odho, mashallah, you know, you still look as ravishing, as gorgeous, as beautiful, or probably more beautiful, really. Well, And it's a lot Sajid, of work. same for you actually, same goes for you. Oh, thank From you. Dhoop Kinare, you know, till now, you know, how do you guys manage to maintain yourself so well? Is it the diet, darling? Stress. Stress? You take stress or you don't take stress? Take stress completely. You It keeps take us stress? young, absolutely. What do you think, Sajid?
Well, yes, partly. hype Stress. I think it's a lot of hard work. You need to, go do things, exercise, take care of your diet, things like that. Not with me. I think I'm aging badly now. No, not at all, darling. But on the other hand, you have to take care of yourself. और ये पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता ये सबको समझ आने लगी है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खाना ज़्यादा ना खाएं, ये चीज़ें ना करें. तो जाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए. सिर्फ एक्टर्स ही को नहीं, सब लोगों को. And women have an advantage, of course. Of course. Makeup, darling, makeup. And thank you, by the way. We can cover so much मेरे लिए with कुछ that. नहीं लेकर आए ना. देखो मेरे लिए अतिका कितने सारी मजे की चीजें लेकर आई है. नहीं, मैंने And अतिका को you बचा दिया can't था. have any of it. Why? ये सब मेरा है. अच्छा. हाँ, प्लीज आप रखिए. अच्छा सुनो, तुम खाने पका लेती हो? बिल्कुल. किस किस्म के खाने पकाना पसंद करती हो? Pakistani, Angrezi. I mean, I don't know, pasta, Italian. My children love pasta, so I do a lot of Italian. यहाँ पे इतना नहीं पकाती because काम बहुत होता है. लेकिन when I was in the States, I used to cook every day. I enjoy cooking. It's extremely therapeutic, and I enjoy cooking for good company. Hi. So you have to come over for dinner. Please, we must. Absolutely. और साजिद को जरूर बुला लेना. But बगैर शकीला के. बगैर शकीला के. I'm very fond of her. I mean, she's a No, lovely I will never person. call you without Shakila, okay? Really? No, but Let's be मैं clear But about I'm this. coming with her. That's fine. हाँ. जावेद मिल लेंगे ना आपसे. हाय darling. हाय देखो क्या आजकल कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या? Absolutely not. इतने मजे से प्लेटर पे रख के I'm अपना an शौहर मुझे पेश कर रही हो. I'm an extremely understanding wife. Hi, Pakistani women, learn something from Atiqa Odho. Hi, I want every woman to be as understanding, as confident, really, as you are, Atiqa. Oh Brilliant. God, what will happen to us? We'll multiply more, I guess, Oh in dear. numbers. Think of the population No, explosion. but I'm Jani, serious. for you, I'm serious. You have to come for dinner. I'd love to. You give me a date and we're going to do this. And I darling, will whenever. cook. Lovely. And I'll bring something. Let's have a one-dish party. Good idea. Huh? I'm totally into one-dish parties, if you know what I mean. What dish are you going to bring, darling? No, I don't cook, so I'll bring something definitely. But I'm I can't sure you'll cook bring for you. something. 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 Yeah. Not to worry. Sajid Hasan, who's wasted so much time. बहुत घाटे का सौदा किया तुमने साजिद हसन. You know, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हासिल किया तुमने. ये आपकी सोच. By the way, तुम्हें समीना के शो पे जाने का इत्तेफाक हुआ? Samina कौन? Samina Pizzata, of course, darling. Oh, okay. गई उसके शो पर? I haven't gone as yet. You haven't gone to see her? Really? I think she does a fabulous show. है ना? हाँ जान. I've seen bits of it. It's quite interesting. Yeah, are you being sarcastic? I'm not being sarcastic. Why does it seem so? मुझे अपना हाथ दो. Please, बहुत ठंडे Now होंगे they're getting दिन, कोई touchy बात. feely. Now I really का पहले बातें हो रही थी. अब हाथ पकड़े जा रहे हैं मैं कोई घर बात जा I'm a रही bit inspired now हूँ. I'm by going back to my poor hubby who's waiting for Samina. me. You know, कुछ चीजें होती हैं ना वो जब तक हाथ ना लगा लो तब तक हाँ. महसूस नहीं होती. अच्छा, okay. हाँ, and Samina believes in touch. Okay. You know, she's a Okay. very touchy person. Okay. Also, Samina, please don't get touchy about this, though. You know how I am. And by the way, I saw Bushra's show. Did you see Bushra's show? No. Bushra Atika, Ansari. हाँ. अच्छा. डिप्लोमेटिकली अच्छे जवाब नहीं दे रही हैं आप. मैं नहीं अच्छा. दोनों I've शो seen नहीं it. देखे हुए आपने. Well, I think नहीं Samina को अच्छा ही किया ना उसने नहीं देखे. I've seen हाँ मेरी Samina- जान. bits of Samina's show. I haven't seen Bushra's yet. बुशरा का नहीं देखा तुमने? हाँ. But they must be popular shows because you like them and you're talking about them. Yes. बहुत popular shows हैं. गजनफर बड़ी शौक से देखता है बुशरा का show. You know how it is. Have you invited Ghazanfar to this yet? I'd love to invite Gazanfar. He would be delightful to have. Really? Yeah. He's a very interesting person. But I think वो भी थोड़ा सा शर्मीला सा है. He's camera shy, but हाँ, he's I a very think he's a intelligent man. Yeah, he is. You know? Theatre. He's the guru of television, actually. I mean, He is. Yeah. But there's so many other gurus around these no, days. they don't know darling. anything about television. Really? But you're right, actually. He's the biggest. Ghazanfar has done really well. He's done a lot himself. for the industry. Really, he has, and promoted so much new talent. But theatre, let's talk about theatre, your theatre days. तुमने राहत के साथ theatre किया, तुमने Grips यास्मीन इस्माइल के साथ theatre किया with Imran Aslam. Also, what kind of relationship do you have with Imran? इमरान असलम के साथ अब दोस्ती, मगर वो बहुत बिजी रहते हैं. अब उनके पास इतना टाइम नहीं है हम जैसे गरीब फनकारों के लिए.
So we haven't met each other for a very long time, but brilliant writer, and I think it's a sad thing that he doesn't indulge in writing anymore, and I've been saying that for a very long time to him. But he hasn't been writing, it is so sad. And आप भी तो कर चुकी हैं उनके साथ काफी plays. हाँ, मैंने उनके साथ काफी काम Imran is a brilliant writer. I think you should Again, write. a very dear friend also. Yes, he's a हम दोस्ती वक्त तो काम आदमी का बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो उतना टाइम तो नहीं दे पाते, लेकिन I have nothing but good wishes for him, and I'm hoping that one of these days we're going to meet and do something big, because उस आदमी का जहन जितना कमाल सोचता है, जो जुमले वो लिख पाते हैं, अभी तक अभी कोई 20 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, थिएटर में, टेलीविज़न में, फिल्म भी कर ली, लेकिन जो जुमले का मज़ा मुझे इमरान का आता था वो कहीं अभी तक मैं नहीं. अभी हम एक थिएटर के बारे में सोच रहे हैं, थिएटर कंपनी के बारे में, उसका जो पहला प्ले है वो इमरान असलम का लिखा हुआ मैं चाहता हूँ, जंगल में मंगल बाजार. अमेजिंग प्ले, एंड आई वाज रीडिंग इट, वी वर बोथ रीडिंग इट अबाउट month back, and it's still so fresh. You don't need to change anything. But we've requested Imran to to look, update it and allow us to use it. Yeah. Because it's a How do you wonderful piece of how work. do you find Farishte, by the way? I have to be awfully honest again. Yeah. I mean, Imran is fine. Yeah. He's a sweetheart. I love being with him. He's an intelligent man. बड़ा अच्छा हमारा तबादला ख्याल होता है बहुत सारी major issues के ऊपर. How it is. But Farishte seems to be a very insecure woman. No. वो आपको देख के हो जाती होंगी ना. I think I wanted to know from you. Is she like that with you Not also? at all. I or think is it she's only delightful. with me? She's wonderful. Really? Again, you see, there's this problem. I mean, I don't know what it is, but these wives are just, they, I have no issues with them, and she's. I don't know whether to be worried about it or happy about it. How understanding has Javed been? I mean, considering extremely. But then you see, वो यही चीज़ है ना कि देखें ना, he has very little to fear also, no? Because हम काम साथ करते हैं, we live together, we travel together. He's with me all the time. तो कोई there's no room for misunderstanding as such. ना हमारी again जैसे साजिद and Shakila friends, Javed and I are friends also. हमारी खूब लड़ाइयाँ भी होती हैं. And he says you're a very difficult person, a very difficult woman. But I wouldn't have it any other way because you're extremely entertaining. There's never a dull moment, And मैं जावेद से सिर्फ ये एक बात मैंने बहुत अरसा पहले समझा दी थी कि आई एम एन एक्टर, और अदाकार जो होता है उसको जज्बात अपने वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखना होता है, otherwise you can't do the job you do. You have to be emotionally charged to do the job you do. So that is why the day I become calm and sober, or you become calm and sober, our job's over, It's a personality type. So we're very, fortunate that way. So how do you keep your emotions charged, darling? Well, different characters, that's what I do. Sajid, you're not doing this right. No? No, come on. अच्छा We want the truth here. We want the truth, darling. Really, I mean, How I'm do you- quite boring, I really am. I must tell you, आपको पता नहीं, I'm really a very boring person. Mostly जो शकीला की ग्राइप होती है कि टीवी के सामने बैठे रहता हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ या कोई फिल्म देख ली या कोई किताब पढ़ ली अगर बहुत इंस्पायर करती है मुझे कोई किताबों से भी एक वक्त में तो बहुत लगाव था, लेकिन मैं हर किताब नहीं पढ़ पाता. अब कोई बहुत ही अच्छी कोई स्टिमुलेटिंग किताब कोई मिल जाए तो शायद, क्योंकि क्लासिकल लिटरेचर के बाद आप पढ़ के जब आप आगे निकलते हैं तो हर चीज़ आपको इंस्पायर नहीं करती उतना, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी बोरिंग आदमी हूँ. I'd like to spend my time with my child. आई थिंक ये गलत बोल रहे हो तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो. आई थिंक तुम बड़े एक एंटरटेनिंग आदमी हो और तुम्हारे साथ हमेशा वक्त गुजारने की हमेशा खुशी होती है. बट वन थिंग अगेन जिसकी मुझे खुशी है और फ़ख्र भी है, वो ये कि अ लॉट ऑफ अस इन पाकिस्तान स्पेशली इन शो बिजनेस, सभी एक्टर्स की ख्वाहिश होती है टू गो ऑन अ बिगर level or to go on a bigger platform, and the first opening is India for most actors. You were a star in India before even you went there, really. और बड़ी इज़्ज़त से आपको बुलाया गया वहाँ पर और बहुत ही इज़्ज़त से आपसे काम करवाया गया. How was working and how do you compare attitudes, professionalism, across the border and here? वेल इंडिया में मैं काम करने जब गया था तो आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है. वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. प्रोफेशनल इस लिहाज से कि अगर उन्होंने 9 बजे कहा है तो सब 9 बजे मौजूद हैं. 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शिफ्ट है तो शिफ्ट है. खाना इज़्ज़त बहुत मिलती है वहाँ, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं.
इंडियन माहौल में मैं ये समझता हूँ कि एक्टर की जितनी इज्जत है वो शायद पाकिस्तान में किसी की भी नहीं होती। तुम्हें नहीं किसी महेश भट्ट ने ऑफर मुझे की? बहुत अरसे पहले before I started, in fact Sajid knows this, before I even started working out here, I was offered films in India and I refused to do them because I believed then and I believe now that the kind of respect and sort of value I will get in my own country I will never get anywhere else in the world, नहीं, and we have to build ourselves from our base नहीं वो तो and सही, go देखिए मैं outwards, you इसके know? मैं एज एन एक्टर मैं अगर आप जैसे क्रिकेट है, आप क्या इंडिया से नहीं खेलते क्रिकेट? खेलते हैं ना। मेरी पहचान तो पाकिस्तान है, इससे तो कोई बहस ही नहीं है। मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, सारी जिंदगी पाकिस्तान से ही, सब कुछ मैंने पाकिस्तान में किया और पाकिस्तान के अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिले वहाँ जाके किसी अदाकार के साथ अदाकारी करने का, जिस तरह क्रिकेटर्स को मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, अब तेंदुलकर के साथ अगर शोएब अख्तर आपने नहीं खिलाया तो मज़ा नहीं, तो हमें भी चाहिए ना कि हम जाके हमें वहाँ करें। उनके लोग यहाँ हम इतने बुला रहे हैं, अब हमारी टीवी के चैनल्स में अगर आप देखें, बट आप देख लेना हमारा भी क्या हाल है, हम भी बिक जाते हैं ना, इन द सेंस कि आप जाएं ज़रूर जाएं बट यू गो एज द स्टार दैट यू आर इन योर कंट्री ना। अच्छा, द अदर थिंग इज दिस दैट कि आप देख लें टीवी का हाल देख लें, आप यहाँ पे सो मेनी चैनल्स आर रनिंग इंडियन कंटेंट राइट नाउ। आप मुझे एक शो का नाम बता दें जो अभी इंडिया में चल रहा है पाकिस्तानी, Which is so pathetic, really. एक मुझे शो इतना इंडिया में गुस्सा नहीं चढ़ता चलता, है। पाकिस्तानी शो एक नहीं चलता। और मैं इमरान असलम को बुलाकर ये सवाल करना चाहती हूँ उससे, you know, he's one man who keeps making fun of Indian soaps in most of his plays all the time. You know, he's the first one to come and criticize, you know, Indian sort of soaps and everything. And then he's the president of a channel that is showing so much of Indian I think it goes beyond content. a channel. I think the government has to address this. और मैं ये बहुत इनफैक्ट मैंने एक ख़त लिखा था प्रेसिडेंट साहब को जिसका जवाब नहीं आया, सो आई एम वेरी अपसेट। लेकिन उसमें मैंने ये सब चीज़ें लिखी कि देखें, you know, what are we doing? I mean, where is our self-worth and identity? Why are we allowing all this to happen? We are allowing them to eat into our market. because we shouldn't be insecure. It has to be a We barter. shouldn't be insecure. No, but it should be a Atiqa. barter. It's not about insecurity. It's about having an equal barter. नहीं, बट बार्टर आप देखिए, बार्टर की जब आप बात करते हैं ना तो ये पीपल टू पीपल होना चाहिए। इसका किसी तरह भी ताल्लुक गवर्नमेंट से मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो एक नेचुरल फ्लो है, अगर आपके यहाँ पाकिस्तानी इंडियन फिल्में देखते हैं तो देखते हैं, आपके यहाँ बेतहाशा देखते हैं। India should feel the same. India should feel this, but if their people don't want to watch your films, How do you know? What how not do you our make them? films, But Urdu do drama it? is very popular. No, but there's But nothing they do wrong. it then. ना, But वो जो तो I गया। feel there's nothing wrong with watching an Indian film. लेकिन ये जो केबल के ऊपर free of cost 24 hours you have Indian movies running back to back, I think that's wrong. You know, that needs to, and I think Pemba needs to come down, address this issue I also. think the whole idea of content, the content we are projecting on the channels is incorrect, because I think that we should be fighting for an equal platform or a platform. Even if we can't get an equal platform, I think we should be fighting for a platform. We have Urdu drama, which is a unique product of Pakistan, which is very accepted and liked in India. It's a big market for us. But anyway, acting की, modeling की, इतना कुछ किया माशाल्लाह, now you're running a successful business. और कोई ऐसी चीज़ है जो करना चाहोगी ज़िंदगी में? वैसे तो हर रोज़ एक कोई सोच आती है ना, we always think कि अब ये this is a problem with creative people, like especially like Sajid and all, कि you want to do something constantly, you need change, you need change, you need a new challenge. But I think, you know, अब इस stage पे ये है कि if you ask me what my biggest worry is, it's not career driven or professional. मुझे पता है वो ups and downs आती हैं, profession is not an issue, you have to work hard and it works out. I think my biggest worry or my biggest sort of, not that my kids give me any trouble, I have mashallah very nice children, very good kids, loving, they're typical teenagers, you know, लेकिन मुझे ये रहता है कि I hope I've done a good job with them, because I'm always worried about what's going to happen in the future for them. Because we have sort of, I mean, you know, been a very close-knit family. And literally mere bachche wo time, Sajid is a witness to this. I have pictures of him with my children really young on sets, Nijat ke waqt bhi, and you know, there were times when it was very hard for me, because I've been on and off, I've been like a single mom, you know, in phases, and I had to bring up my kids around the work environment. अच्छा, एक चीज़ अच्छी ये थी कि क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे, तो I was very particular about the people I worked with. You know, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी ज़िंदगी में, because मैं नहीं चाहती थी कि उनको ऐसी environment में लेके आऊँ जहाँ पे खुदा न खास्ता, you know, they sort of were damaged in any way.
And then I had wonderful friends in this business that helped me through my tough times also. But you know, I'm feeling so envious already. माशाल्लाह, और इतनी खुशी हुई तुमने अपने बच्चों के बारे में बात की. You know that you have ज़िंदगी में एक मकसद है, बच्चों को you know you like to see उनकी खुशियाँ देखना चाहोगी. You know, काश ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सा पॉइंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव sort of एरिया है. That I have no children. तुम अपना बेटा मुझे उधार दे सकती हो? Don't look at me. She's asking you. तुम्हारा बेटा I don't know. What do you think? Foreign. बिलाल बहुत खुश होगा आपके No, पास. I don't know. मैं I भी don't know बहुत if I खुश want to sort of expose him to this. To what, darling? I have no Nothing. children. I'm not being mean. I'm a little concerned, but he may get an education that I don't want to get at Oh, this come on, stage. He's darling. young. All education is good education. That's what I believe in. हाँ, भेजना मेरे And पास. he's drop dead gorgeous also. हाँ, huh? Hi. Bilal is six Stop foot 2 in tempting. height. 6'2". Hi. Drop dead gorgeous, and he's got that sort of very Yeah. wonderful, chilled out, laid back personality that kind of drives the women mad, and I'm very worried about him because I think generally in life things will be too easy for him. But sweetie, you send him to me, and then you won't have to worry about a thing. I'm He'll come back sure. completely equipped. एकदम बड़ा And his करके. sister would kill me, so he's got an elder sister who's actually more his mum than I am. So मेरी जो बड़ी बेटी है वो उसकी माँ है, तो वो तो मुझे. कितना age difference है दोनों में? Umnia is now 22, Okay. and Bilal is just turned 19. Just turned 19. Yeah, so there's a 3-year. Is that the right age for you? Perfect, darling. dear. My heart, I tell you, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, it's like the army, open to all men between the ages of 18 and 24. Oh God! But of course, I make exceptions all the time, Sajid. Okay, thank so you don't have to worry about I a am thing. so glad. साजिद, कोई बात कहना चाहोगे मेरे देखने वालों से, हमारे देखने वालों से, अपने बहुत सारे चाहने वालों से? मैं इस किस्म की बातें आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, मेहनत करते रहिए और पाकिस्तान को आगे से आगे करने की कोशिश करते रहिए. दैट्स अबाउट इट. हाँ, लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं. मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ. मुझे यकीन है कि शकीला भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है. बट एक एक्टर की ज़िंदगी के अंदर, स्पेशली तुम्हारे जैसे एक्टर के अंदर जिसके हुआ सो मच टू गिव रियली, उसके लिए बीवी की मोहब्बत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. हाँ, नहीं होनी. I will tell Shakila. I swear I will. मैं बताऊंगा. What are you going to tell her? Are you threatening me? No, I'm just. क्या मुझसे लड़ने आएगी यहाँ पर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल. She loves you. हाँ, भेज देना वैसे अगर आना चाहे लड़ने मुझसे तो. नहीं, औरत की दुश्मन नहीं है भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें. It's been so wonderful having the two of you over. Thank you for And inviting we have us. to discuss business options. Absolutely, you come for dinner and I we'll have talk. to come for the dinner. Absolutely. And then we talk, and you can have Sajid there as Sure. well. तो हम तीनों मिलेंगे, बैठेंगे तो अच्छी बातचीत रहेगी. बिल्कुल. फिर जावेद भी होंगे. You must bring Shakila I will. also, because now she's been very kind to tell me that I can have Jaवेद. And I'll keep Bilal out of the way completely. Bilal is also going to be there, ना? Of I course, don't of know. course. I'm Aye, worried aye. now. इसी सिटिंग में ही छोड़ दिया आपने. नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा. नवाजिश, मैडम नवाजिश, आपने ये क्या किया? आपने कहा शकीला को बुलाओ. मैं तो एक दफा पकड़ लूँ ना और मुझे नाजी बोलो जान. अच्छा, Why you being नाजी. so formal? Fine Okay. in front of the camera, but नहीं, पहली you don't know मुलाकात है ना, formality. इसलिए शायद मैं. क्या बोले? मैंने कहा शायद पहली मुलाकात. टीवी पे पहली मुलाकात है. ये तो. हाँ, of course. Public meeting. पब्लिक मीटिंग. Public meeting. हाँ, लेकिन एक दफा जो मैं चीज़ पकड़ लूँ ना, उसको पकड़े रखती हूँ. हाँ. तो एक चीज. Sajid, I'm feeling very sorry for you Don't today. worry, don't worry. I think my gender has come in handy today. But it was lovely having Atiqa and Sajid Hasan. Thank you so much, both of you really. Sajid Hasan से मिलके, Atiqa Odho से मिलके आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी. फ़िलहाल हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी. Until next week, जब मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी with two very interesting personalities. Until then, you take care of yourselves. खुदा हाफिज़. Nawazish.